2020 के बाद अगर हमने एक बहुत वॉलेटाइल सेशन देखा है, so that has been the last week. We had seen such a roller coaster ride in the markets. We have already fallen close to 10%. Single day का ही fall हमारा almost 8 to 9% का fall था in the last week. And this was something that we had already predicted well in advance. तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो पिछला एनालिसिस था उसके हिसाब से मार्केट में क्या हुआ, उसके साथ साथ हम इस वीक का भी एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जिसको आपको अपने रडार में रखना चाहिए। So welcome back guys to another exciting and interesting session with me Asha on your favorite YouTube channel Market Wizard Stock Options and Futures। आगे बढ़ने से पहले let's quickly see कि ये जो हम बता रहे हैं कि आप अपना ये जो फॉल है उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेट्स सी इफ दैट इज पॉसिबल। तो आप देख सकते हो दिस इज द वीडियो दैट वी हैड मेड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, जहां पे हम क्लियरली आपको बता रहे हैं कि देयर इज अ ग्रहण दैट यू हैव टू वॉच आउट फॉर। तो मेजर एस्ट्रो इवेंट जो आने वाला है दैट्स अ ड्यूरिंग हॉलिडे, सो डू कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट जो मेजर एस्ट्रो इवेंट जो आने वाला है दैट इज सोलर इक्लिप्स, जिनका इन्फ्लुएंस है ऑन द 29th of March। So this is something that we had already shared in our video. जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा हो, go back and watch this video। और हमने क्लियरली एक और चीज आपके साथ वेबिनार में भी बताया था कि नॉर्मली एक्लिप्स में आपको ट्रेंड रिवर्सल होगा। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी गाइस, और 29th वाज अ हॉलीडे जब हमें सोलर एक्लिप्स हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो वी कुडंट होल्ड ऑन टू दिस हाई। ये जो प्रीवियस डे था दैट इज 29th का अगर इक्लिप्स है तो द इंपॉर्टेंट डेज, इफ इट्स अ हॉलीडे, द इंपॉर्टेंट डे इज गोइंग टू बी द प्रीवियस डे एंड द नेक्स्ट डे। आप देख सकते हो प्रीवियस डे का वो एंटायर जो लो है वो मार्केट को होल्ड नहीं कर पाए, एंड यू कैन सी फ्रॉम देयर वी सॉ अ ह्यूज फॉल। अगर आप नेक्स्ट डे का भी अगर आप देखो, दिस इज द 1st of April, so as I always tell you plus or minus one day when there is a holiday, 1st of April का लो भी हमने ब्रीच किया और वहां से we just tanked। This is how you can predict the markets using financial astrology, and this was clearly mentioned to you in our video as well as when we did our live। जिन लोगों ने भी लाइव वेबिनार ज्वाइन किया आपको याद होगा हमने क्लियरली बोला था eclipse is a trend reversal, so आपको ध्यान रहना चाहिए during eclipse। Now आगे बढ़ते हैं, let's see after that what happened। This was a major fall and this was on the 7th। Now let's see whether we could catch this fall and whether we could catch this rise that happened in the market। तो चलिए देख लेते हैं। तो the first alert that we had given, so these are the screenshots for your reference। So the first alert जो हमने शेयर किया था that was on the 7th। हमने क्लियरली बताया था on the 7th that you can hedge and carry your positions at around 230। This was the first alert given on the 7th। देख लेते हैं नेक्स्ट अलर्ट कब हमने दिया था। द नेक्स्ट अलर्ट वाज गिवन ऑन द 9th, जहां पे हमने अगेन बताया था कि आप हेज करके अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हो। दिस इज अ सेकंड अलर्ट अगेन गिवन। We have already captured 500 points। This is a second alert that we had given where we had said that you can carry positional longs। Next हमने third alert हमने वापस कल हमने दिया था। Again, third alert we had shared yesterday। We had said that this is positional, you can carry your longs here। So there were 3 alerts that we have already shared। So the पहला alert हमने यहाँ पे दिया था, वहां से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की रैली आपको मार्केट में देखने को मिला। सेकेंड अलर्ट हमने 9th को दिया था, वहां से भी मार्केट में ऑलमोस्ट अनदर 500 पॉइंट्स की रैली। एंड अगेन yesterday we have carried our longs and let's see what happens now in the market। आप देख सकते हो एवरी डे द मार्केट इज गैपिंग अप, एवरी डे यू कैन सी अ गैप अप इन द मार्केट। और यहाँ पे अभी आज का जो न्यूज है दैट इज वेयर अगेन द नेगोशिएशंस आर गोइंग टू हैपन। सो हाई पॉसिबिलिटी इज देयर दैट अगेन SGX निफ्टी इज शोइंग अ गैप अप एज एन गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग अ गैप अप। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यहाँ पे भी हम लोग गैप अप करें। सो जिन लोगों ने भी यहाँ से अपनी पोजिशंस होल्ड कर रखे हैं, यू आर ऑलरेडी सिटिंग इन अ 800 point move that has happened in the market।
नाउ इट इज नॉट जस्ट इन आवर प्रीमियम चैनल, हमने हमारे लाइव वेबिनार अगेन ऑन दिस डे व्हेन द मार्केट क्रैश्ड, हमने लाइव वेबिनार किया था. When the market crashed, we came live and we told all our followers, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं on Telegram, on WhatsApp, हम आप सबको जो ज्वाइन हुए हैं, we clearly told you that from here look for longs in the market. If you see our Telegram channel, हमने निफ्टी 20 और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आपके साथ शेयर किया जो आप लॉन्ग कर सकते थे. सो इट इज नॉट जस्ट इन आवर पेड चैनल, हमने यहाँ पे भी आपको क्लियरली इंडिकेशन बताया था दैट यू कैन गो लॉन्ग इन द मार्केट. So this is something that we had shared in advance और उसका आप देख सकते हो क्या देखने को मिला है. Now let's quickly analyze कि next ये coming week में क्या क्या important astrological events है, क्या क्या dates है जो आपको आपके रडार में रखना चाहिए. तो चलिए पहले देख लेते हैं what are all the important astrological events that's going to happen. तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि Mercury is going to change its sign, there is going to be an ingress that's going to happen in Mercury. उसके साथ साथ Mercury का और Neptune का भी एक there is a conjunction that's going to happen, so it's very important to watch out for those dates. So the important day for you for this particular thing would be 16th and 17th. So Bank Nifty is going to be in focus, so keep Bank Nifty on your radar on these 2 days, which is very important from an astrological perspective. So मैंने clearly आपको बताया है कि Bank Nifty is going to be in focus. So Bank Nifty का आप highs and lows मार्क करके रखिए और वहां से आप अपना trades plan कर सकते हो. उसके अलावा there is one more thing which I wanted to share with you कि technically how can you identify these kind of reversals in the market, how can you identify these kind of reversals. So आप देख सकते हो this particular formation that is called, ये जो formation है मार्केट में गैप डाउन हुआ उसके बाद यहाँ पे मार्केट में गैप अप हुआ. सो इफ आई गो टू अ 75 मिनट्स चार्ट आपको ये बहुत क्लियरली दिखेगा. सो लेट्स गो टू अ 1 आवर चार्ट, आपको ये क्लियरली दिखेगा. लेट मी रिमूव ऑल दी मार्किंग्स दैट आई हैव. Okay, so let's again go back to maybe 2 hours. Yeah, so ये अगर आप देखोगे, so this was a gap down, ये आपका 4th का था ट्रेड, this was on the 7th के बाद this was a closing on the 7th and then you saw a gap up happening here. So this typically ऐसा जब formation होता है when there is a gap between the gap down and then again a gap up, when there is a gaps, this is typically called a island reversal. So इसमें आपको important क्या रहेगा, अगर ये गैप अगर सस्टेन होता है, अगर दिस गैप इज सस्टेन, आप देखिए ये हाई है 22,254 और ये जो लो है दिस इज 22,270, मतलब 20 पॉइंट से ये गैप आपका फिल नहीं हुआ है. सो दिस हाई एंड दिस लो के बीच में देयर इज अ गैप दैट इज देयर. तो यहाँ पे the first candle hua, this is the second candle which gapped down, this is the third candle which gapped up and that gap is still prevalent. If this gap is still prevalent, it is called an island reversal. जब भी ऐसा एक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा तो मार्केट वापस अपना जो जहां पे हाई बना था वहां तक जाने की चांसेस रहेगा. The first will be this gap filling of the previous gap that is formed and the next target will be 23,200. So high possibility है कि Tuesday को market ये gap यहां तक चले जाए. This is called an island reversal. This pattern is called an island reversal and this is a high probability pattern. So जिन लोगों को भी अपनी analysis समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना चाहिए, watch out for such instances where you can go positional in the market. But ये gap होना बहुत जरूरी है. If the gap gets filled, then there is going to be it will not achieve its target and it will continue its trend. The reversal of trend will happen only if this gap doesn't get filled. पिछले ये स्टॉक्स में इंडेक्स में हर जगह काम करेगा. जब भी पहले बना हुआ है आप जाके चेक करिए कहां कहां बना है and you can go and watch and you can see how this is traded. आप past examples भी जाके back test कर सकते हो. So this is very important. So high possibility है, ये जो high है that is 23,200, यहां तक market जाने की high possibility है. So this is how you plan your trades when there is an island reversal that is happening. So अभी हम quickly बात करते हैं about the
important astrological events, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं. So 14th of April को there is a conjunction that's happening in with Saturn, very important conjunction on the 14th, but 14th market is not open. So 15th का high and low आप अपने चार्ट में मार्क करके रखिए. 16th 17th का already we have discussed, that is Mercury ingress and Mercury is also going conjunct with Neptune. तो आपको याद रखना चाहिए that Bank Nifty will show momentum. So ये दो dates का भी high and low becomes very very important. Bank Nifty पे बहुत important एक impact इस पे पड़ेगा. उसके अलावा the next important dates, it's going to be the 20th and 25th. क्या है, we will come back in our next video. अगर कोई भी रिवर्सल्स अगर आपको नेक्स्ट ध्यान में रहना चाहिए, दैट इज ट्रेंड रिवर्सल अगर आपको देखना है, तो आपको फोर्थ को आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने की पॉसिबिलिटी है. दैट इज ऑन द फोर्थ. वी विल कम बैक टू दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस वेदर इट इज गोइंग टू हैपन ऑन द फोर्थ और नॉट. 4th May को you can see a trend reversal that may happen in the market. Till then you can expect the markets to move in one direction. Provided all these important dates आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए. So I've already discussed about 14th के important date है, तो 15th आप मार्क करके रखिए अपने चार्ट में. 16th and 17th is very important from a Bank Nifty perspective. 20-25th का जो week है, I will come back to you on that analysis when we come closer to the week. अभी चलिए बात करते हैं अबाउट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आपको अपने रडार में रखना चाहिए. सो दीज स्टॉक्स आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मोमेंटम दैट कैन हैपन इन दीज स्टॉक्स. बहुत ही अच्छी मूव्स आने की चांसेस है. तो ये वीक आपका कल की दिन छुट्टी है. Do sit and analyze these stocks and see where it's going to go. So the important stocks that you have to keep on your radar are MRF, Manappuram, Patanjali, Zomato जिसका नाम चेंज होके अभी इटर्नल हो गया है, भारती एयरटेल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ITC, NTPC, Page Industries, अदानी ग्रीन एंड तितागर वैगन. ये स्टॉक्स आप अपने रडार पे रखिए, स्टडी करिए. यू हैव 2 days टू स्टडी दीस स्टॉक्स एंड देयर चार्ट्स. इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आप पकड़ने की आपकी पॉसिबिलिटी है. तो डू कीप दीज स्टॉक्स ऑन योर रडार एंड डू वॉच देम. So thank you so much guys. I hope you enjoyed watching this video. Do like, share and comment. वो करना मत भूलिए ताकि हम ऐसे ही important updates आपके साथ share करें. And live market में as usual we will try to give our maximum support. But yes, we would also request you to give your support by liking and subscribing to our channel and sharing your comments with us. See you soon in the next video. Till then, happy learning. Take care. Bye-bye.